Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 9th of October. The session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end. In this video students, we are talking about 4 major rail projects. Then we are talking about IRSA 1.0 standard to build compatibility in the military service communication. It has been launched by DRDO recently. Then we will be talking about an MOU that will strengthen research and technology collaboration. And we will be talking about India AI Impact Summit 2026 that was unveiled by the Government of India that will unite ethics, heritage and modern AI vision of India. All these things and many more will be discussed here, so stay tuned with us till the end. Let's start with national affairs here. The first news we are talking about is the 4 major rail projects that has been approved by the Government of India that are worth 24,634 crore rupees. These initiatives, they are a part of the PM Gati Shakti National Master Plan that aims to enhance connectivity. It will reduce congestion and support the economic growth in states such as your Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat and Chhattisgarh. So across these 4 states, as you can see here, right, the connectivity, congestion will be reduced and economic growth will be prospering, right? So these are the 4 railway multi-tracking project that has been approved by the Ministry of Railways with a total cost of 24,634 crore rupees. Important students, these projects, they will be covering 3,633 villages and this will reduce the and this is a railway project, right? So with this, what we'll be seeing is the logistics will become better. As the logistic will become better, we can see that the connectivity will be enhancing and the amount of time that you were used to take beforehand, right, before these projects, now the time will also be reducing, hence connectivity will become much better. So this is important, take a note of it, right? Also remember, if we talk about Maharashtra, right, they have launched or this state was informed on 1st of May in 1960, right, as their official language is Marathi. And for Maharashtra, who is the Chief Minister, Devendra Fadnavis, and in Maharashtra only, right, a Marathi OTT platform has been launched. Correct. What is the capital of Maharashtra? It is Mumbai. And who is the governor here? Acharya Devrat. Next is DRDO. They have launched IRSA 1.0 standard to build compatibility in the military service communication. See, what is this IRSA? IRSA is your Indian Radio Software Architecture Standard 1.0. This is this will enable interoperability in military communication during the national workshop organized at the DRDO Bhavan in New Delhi. Right now, what this will be specifically for? This will enhancing the communication between the forces, right? And here it will be working on the wave portability mechanism. This is to ensure that the waveform portability, that is your SDR, software defined radios interoperability, certification and conformance, they are in all them aligned with the India's vision. And also it has become India's first national specification that is defining a standard software architecture for these SDRs, that is your software defined radios, correct? And it is DRDO, they have launched this IRSA 1.0 standard to build compatibility in the military service communication. Important students, take a note of it. Apart from this, next is IIT Madras. They have also signed a memorandum of understanding with Indian Navy to strengthen research and technology collaboration. See, in today's world, technology is advancing at a very fast pace, right? And we need to upgrade our equipments as per the same pace, right? Because if we are not upgrading our equipments, then our technology will become outdated and our defense, specifically in the defense sector, right? If we need to have the up-to-date technologies, because if we are not upgrading, right, we will be left behind, correct? So for the same reason, IIT Madras, they have signed this MOU with the Indian Navy, where we will be strengthening the research and development and research and innovation in the technology sector, and we will be upgrading our indigenous, or we will be promoting the indigenous naval technology. We will be promoting indigenous research partnerships and skill development here.
right? Take a note of this. Then apart from this, students, remember it was INS Kadmat that attended a port call in Indonesia. Port call in Indonesia. Then our country, India, we have been elected as the chairman of AIBD Executive Board, and it was selected, and this decision was taken during the 23rd General Conference. Right? Apart from this, it is CISF. They have launched the first all women commando unit that will boost the gender parity. Next, Government of India has unveiled India AI Impact Summit 2026 logo, unites ethics, heritage and modern AI vision, right? So direct question, right? India AI Impact Summit, which is scheduled to be held when? It is scheduled to be held from 19th of Feb to 20th of Feb in 2026 at Bharat Mandapam in New Delhi. Take a note of this. The selection of the logo here, this is 2026 students, right? So the selection of the logo for the summit was done through a logo design contest that was hosted by the MyGov platform from 28th of May to 12th of June, right? And this India AI Impact Summit, as the name suggests, what is the aim here? That how AI, artificial intelligence, will be impacting the day-to-day lives of India, right? What are the new technologies that will be coming here, right? One such technology that India is implemented is Bhashini. What is this Bhashini? It is an AI multilingual platform that is providing multilingual support across various sectors. Even we know that our India is having multiple languages. We have multiple dialects, right? And sometimes it becomes a barrier in communication during governance also. So in our parliament, right, we are also implementing this Bhashini so that the communication becomes smooth, and because of communication there is no, or because of language there is no barrier in the communication. Correct. So coming back, India AI Impact Summit 2026. For that, a logo was unveiled by the Government of India, which is scheduled to be held next year in Feb, that is on 19th and 20th of Feb in 2026, and it will be held at Bharat Mandapam in New Delhi. Correct, students, take a note of it. Next, here you can see, if we talk about the logo here, there will be a Ashoka Chakra at the center of the logo, and it symbolizes tradition, diversity and clarity. Next is international affairs. ILO's State of Social Justice Report 2025 was released. ILO is your International Labour Organization. This report is talking about inequality and the decline of the trust in the institutions hinders social justice worldwide. I repeat, this report, it highlighted that the world is becoming wealthier, healthier and better educated than in 1995, and progress here remains uneven because the inequality is rising. The people who are having huge amount of money, they are only getting the benefits of everything, and they are getting richer day by day, and this inequality is rising day by day, and we are seeing because of which that the rights are also not shared equally, right? And this is the report that is talking about that the inequality is rising in the world. This report was released ahead of the second edition of the World Summit for Social Development, right? That was scheduled to be held in Doha, Qatar, and it will be held when? In November 2025. Correct. So International Labour Organization, they have released this report, and it stated that the inequality is rising in the world. And this was released ahead of the second World Summit for Social Development, scheduled to be held in Doha, Qatar in November 2025. Also, the report showed that the child labor among those aged between 5 to 14 years has decreased from 250 million in 1995 to 106 million in 2024, which is a good news. Also, the rate of child labor has declined, if we consider here, from 20.6% to 7.8% in terms of the percentage. Also, if we talk about the poverty has also reduced significantly, and in India also the poverty has reduced significantly. The report showed that the extreme poverty rate has decreased from 4 out of 10 people in 1995. It has now reduced to 1 in 10 people in 2024. So there has been a significant reduction in poverty. Also, if we talk about the school completion rate, that the people who are going, the students, those who are going to school, they are completing the school. In that, we have also seen that the school completion rate in primary and secondary school has increased by 10% in primary area, and in for secondary schools it is 22%. Correct. Important. So these are some things that you need to remember here, right? Also, one other data that you need to remember here, that poverty for 800 million people, they still live below $3 per day, which is now the new target or the new guidelines by United Nations, where they accept what is poverty. So people earning below 3% are considered living below poverty.
Next, also here you can see one more data that top 1% hold 20% of the income and 30% of the 38% of the total wealth, which is a very, we can say, high inequality in the world. Next is Reserve Bank of India. They have linked Bharat Connect FX retail to facilitate the dollar transaction. I repeat, recently RBI they have recently linked the Bharat Connect, correct, and FX, that is your forex retail platform, correct, with the Bharat Connect, that is your Bharat Bill Payment Connect system. So what has been connected? Bharat Connect and FX retail has been connected. What this will do is this will basically facilitate the dollar transaction, and this FX retail, this is the platform operated by Clear Corp. This was launched in 2019. The objective of this FX retail platform was to bring greater transparency and fairness in the pricing of the foreign exchange for their users, right? And if we talk about this Bharat Connect, remember this Bharat Connect, now it has been connected with this, that is Bharat Connect is your Bharat Bill Payment System, right? And here you can see RBI, right? They have recently launched a pilot project, that means it will be on trial basis for the linkage of FX, that is your forex retail platform of the Clear Corp Dealing Systems India Limited, right, with Bharat Connect. Correct, take a note of this. And in the pilot phase, Axis Bank, SBI, ICICI Bank, Federal Bank and Yes Bank will be taken into consideration here. Correct. Apart from this, this is a pilot project, that means it will be on trial basis. Where was this launched? This was launched at the Global FinTech Fest 2025 that was held at the Geo World Convention Center in Mumbai, Maharashtra. What this will do is this will allow the individual customers with the bank accounts at participating banks to register and transact on the FX retail platform through the bank's digital channels and third-party application providers. And as I mentioned, that this pilot phase will be available to these banks in the initial phase. This platform, it will support the transaction for the foreign exchange outward remittance, loading of foreign exchange cards and physical delivery of the foreign currency notes. If we talk about this Global FinTech Fest, right, it is your Payment Council of India, National Payment Council of India and FinTech Coverage Council. These are the three organizations that are organizing this Global FinTech Fest, where at the Geo World Convention Center in Mumbai, Maharashtra. Next is NPCI. They have launched the new subsidiary NTSL to boost the payment innovation in India. I repeat, NPCI, National Payment Corporation of India. This is the apex body that regulates the retail payments and settlement system in India. And they have launched a new tech subsidiary, that is NPCI Tech Solutions Limited, that is NTSL. The aim of which is basically promoting the experimentation and breakthrough in the innovation in the financial technology sector, that is your fintech sector, right? Very important. So what this will do is this will promote innovation. This will boost innovation, research and innovation in the fintech sector, right? And here previous NPCIs, there were three subsidiaries, that is NBSL, NIPL and NBBL. Correct. This will focus research and development. It will be focusing on prototyping of the new payment technologies. It will focus on improving the cross-border payments, improving UPI, improving RuPay, and will support India's digital economy. Next students, it is your Bajaj Finserv. They have rebranded insurance businesses as Bajaj General Insurance and Bajaj Life Insurance. Direct question can be asked that Bajaj Finserv Limited, they have rebranded their insurance businesses, renaming them as Bajaj General Insurance and Bajaj Life Insurance. Correct. Earlier they were known as the Bajaj General Insurance. It was known as Bajaj Alliance General Insurance, and Bajaj Life Insurance earlier was known as Bajaj Alliance Life Insurance. Right now they have been rebranded. Next is SBI General Insurance. They have launched Health Alpha with 50 options. I repeat, recently SBI General Insurance Company Limited, that is a subsidiary of State Bank of India, right? They have launched Health Alpha, right? This is a do-it-yourself, that is DIY health insurance plan that will allow the customers to customize their coverage from over 50 different options, right? It will be a comprehensive financial protection plan that will be provided here, that will be covering medical expenses and ensuring quality healthcare. Also, this is an optional coverage that here up to 10x annually wide range will be provided. Also, this covers ranges from 5 lakhs rupees to maximum amount insured, and a 5-year policy option with tenure based premium reduction, right? Next
Next is RBI. They have cancelled the license of Satara-based Jijamata Mahila Shakari Bank. I repeat, RBI. They have cancelled the banking license of Jijamata Shakari Bank that is based in Satara, Maharashtra. That is an urban cooperative bank, and this is to the and why this was done. This is because of the bank's poor financial position and failure to comply with the regulatory norms. Direct question. Next is economy and business, students. Here, World Bank, they have raised India's GDP forecast to 6.5% for FY26. Earlier, they were projecting how much percent? This question can be asked, right? So, earlier they were projecting a 6.3%, but now it has increased to 6.5%. But for FY27, they have lowered the GDP forecast to 6.3%. See, India is one of the world's largest or fastest growing economy, right? Even because of the US tariffs and the headwinds that we are facing globally, right? We have maintained the projection, and from the past 1 or 2 months when USA imposed the duty on India, even after that multiple rating agencies, they have increased the growth forecast for India, right? Also here you can see that the export of Indian goods to USA, it highlighted that the about 2% of the GDP we are exporting there that went in USA in 2024. USA, they have imposed a 100% tariff on the pharmaceutical sector in India, but in return China, they have lowered their 30% tax and eliminated it to just 0%, right? That means now China can buy those pharmaceutical goods that we were exporting to USA. Now they are willing that we will be buying your goods, right? So it has nullified the effect. Next is awards and recognition. Susumu Kitagawa, Richard Robson, and Omar M. Yakchi. They have won the Nobel Prize in Chemistry. As you can see, 3 of them in the picture here. Correct? So it is the Nobel Prize in Chemistry. Why this Nobel Prize was given? This was awarded for the development of the metal organic framework, right? So for this, they have been granted with this Nobel Prize in Chemistry. You can take here, right? This here prize, $1.2 million will be given in the prize compensation, right? And take a note of this, right? These are the 3 winners that have been awarded here. Also remember, Indian chemistry Nobel winner was Ramakrishnan ji. Next is Lieutenant Colonel actor Mohanlal facilitates with COAS commendation card. I repeat, Lieutenant General Upendra Dwivedi, the Chief of Army Staff, honored the Malayalam film superstar and honorary Lieutenant Colonel Mohanlal Vishwanathan with the COAS commendation card at the Army headquarters in New Delhi, honoring his outstanding societal contribution and long-lasting support to the armed forces. So direct question will be asked here, that who was honored with the COAS commendation card? So Lieutenant Colonel Mohanlal Vishwanathan was honored with this, right? Next is books and authors, students. Union Minister Ram Mohan has launched a book that is Above and Beyond by Shiv Kumar Mohanaka, right? I repeat, Ram Mohan Naidu, the Union Minister of the Civil Aviation, has unveiled a book titled Above and Beyond, Exploring the Amazing World of Aviation, authored by Shiv Kumar Mohanaka, right? Take a note of this. And if we talk about this book is describing about the achievements of the Indian aviation sector. This is a 445-page book. Then next is important is, students, National Postal Week observed from 6th to 10th of October, and this day is basically highlighting the growing role in promoting the socio-economic development of the country, right? Then on 6th of October we observe Technology Day, 7th of October Financial Inclusion Day, 8th of October Philately and Citizen-Centric Services Day, 9th of October as the World Post Day, and 10th of October as the Customer Day, right? Then next is your World Cotton Day, observed on 7th of October, and it is to raise awareness about the cotton, the economic growth it has, right? The economic impact it has on our economy, right? The global trade with it, and also it helps in reducing the poverty, right? This day is observed when? On 7th of October, and first time this day was observed in 2021. Next, students, one more thing here you remember, India, if we talk about 40% of the world cotton area, here productivity is almost 450 kilogram per hectare here, right? Next is state news. Madhya Pradesh has signed a memorandum of understanding with the Spain's FIRA Barcelona International for Convention Center. I repeat, Madhya Pradesh, they signed an MOU with the FIRA Barcelona International, a leading Spanish organization specializing in convention and exhibition management, to develop and operate a world-class convention center. Where it will be established? It will be in Bhopal, Madhya Pradesh. Then next is Arunachal Pradesh. So remember, recently Union Minister G. Kishan Reddy
And Pema Khandu, the Chief Minister of Arunachal Pradesh, has launched Namchik Namphok coal mine in Changlang district, marking the state's first commercial coal mining operation. Question can be asked, which is the Arunachal Pradesh's first commercial coal mining operation? It is which mine? It is your Namchik Namphok coal mine, and G. Kishan Reddy along with the Chief Minister of Arunachal Pradesh, Pema Khandu ji, they inaugurated this coal mine. Correct? Take a note of it. So these are your important current affairs, students. Now it's time for the revision part. Let's move to the revision part and then we'll proceed into the homework section. Mention the company with which Setshore Analytics Private Limited signed an MOU to deliver end-to-end Earth observation as a service solution. So with the help of satellite here, data will be provided about Earth. So this is an Earth observation as a service. It is Dhruva Space Private Limited, right? This is the company with which Setshore Analytics Private Limited, they have signed this MOU. Next, according to Credit Rating Information Service of India Limited, that is CRISIL, what is the revised GDP growth of India for the FY26 as predicted by it in July 2025? It is 6.5%. Next, mention the state that became the third Indian state to record over 1 CR or 1 crore registered stock market investors after Maharashtra and UP, according to the latest data released by NSE in July. Which is that state after Maharashtra and UP? It is Gujarat. Next, identify the organization that signed an MOU with India Meteorological Department IMD to launch India's first weather derivatives. So first weather derivative, important question, launched by whom? Launched by National Commodity and Derivatives Exchange Limited. Next is identify the airlines that signed $12.25 billion agreement with Airbus to purchase 50 aircraft, that is A321XLR aircraft, with purchase rights for additional 20 of them, marking a significant strategic shift towards creating world's first low-cost narrow-body network carrier. So identify that airline, it is AirAsia, right? And if asked about the aircraft, that is A321XLR. Next, in July, which company unveiled their new corporate logo to commemorate the 70th anniversary of the foundation of the group? It is Yamaha Motor Company Limited, right? And this is the first time in 27 years that the company has registered their corporate or redesigned their corporate logo. Next, mention the company that signed an MOU with Care Expert Technologies Private Limited, that is a Reliance Jio-backed healthcare technology company, to develop and launch a national digital healthcare platform. Which is it? It is Telecom Egypt. Option 1 is right here. Next, identify the company that joined the FTSE for Good Index series designed to measure the performance of companies demonstrating strong environmental, social and governance practices. Which is it? It is your JSW Energy Limited. Next, in July, which of the following launched the second cohort of the Orbit program under the Atal Incubation Center T-Hub Space Tech Accelerator to support 17 space tech startups? So which is it? It is T-Hub, that is your technology hub. Next, identify the company that became the world's first publicly traded company to achieve a market capitalization of $4 trillion. It is NVIDIA Corporation, right? And with this, NVIDIA has surpassed Microsoft Corporation's market cap, which hold a market cap of $3.75 trillion, right? Whereas Apple stands at $3.17 trillion. Next, identify the shipping companies that announced a 10,000 crore rupees investment in the Indian shipping industry in July, marking the largest FDI in this sector. It is Introint Navigation Company and Danish and Partners Limited. This is the largest FDI in the Indian shipping sector since the government of India, they have opened 100% FDI in this shipping sector in 2005, and even 100% FDI is approved in the space sector also. Next, identify the stock exchange that was ranked 4th globally in IPO fundraising during the first half of the calendar year 25 as per the S&P Global Market Intelligence data. It is NSE. Right? It is your National Stock Exchange of India. So right option 2. Next, what was the India's retail inflation measured by CPI according to the Consumer Price Index for rural, urban and combined for the month of June, released by National Statistics Office in July 2025. So what was India's retail inflation here? It stands at 2.10%. Next, India's overall trade deficit, including merchandise and service, it narrowed sharply down to $3.51 billion as per the trade statistics for the first quarter of FY26 and for the month of June 2025 as released by the Ministry of Commerce and Industry in the July month. Next,
the NABARD, they commemorated their 44th foundation day with the launch of several key initiatives in Chennai, Tamil Nadu. We have to find the correct option here. If we look at the options here, we can see option A is right, B is right, C is wrong. C is saying that NABARD, they have launched a Telegram channel targeting the financial inclusion among the rural and semi-urban population. Is it correct? So this is not a Telegram channel that they launched, but a a WhatsApp broadcast channel was launched here, not a Telegram, WhatsApp channel. Next, identify the company that entered into a binding agreement with Alliance Group to form a 50-50 domestic reinsurance joint venture to serve the dynamic and high growth insurance sector in India. Which among the following is right? It is Geo Financial Service Limited, right? And the joint venture aims to provide, and it targets the India's goal, that is to achieve insurance for all by 2047. Next, what is India's GDP growth forecast for FY25 according to the report titled Asian Development Outlook for July 2025, Slower Growth Amid Tariffs and Uncertainty. This was released by Asian Development Bank in the month of July. So it is 6.5%. Next, identify the company that estimated India's GDP forecast to be 6.3% for FY26. Which among the following is right? It is India Ratings and Research, right? Take a note of it. Then next, mention the company with which BEML Limited, they have signed an MOU, Memorandum of Understanding, to work together on the co-development of advanced marine systems covering innovation, indigenous design and manufacturing under Atmanirbhar Bharat initiative. It is Hindustan Shipyards Limited. Next, as per the International Monetary Fund IMF's July update for the World Economic Outlook update, that is the released by, or this question can also be asked students, that this World Economic Outlook is released by whom? It is released by IMF, that is International Monetary Fund. Question asked is, what is India's revised GDP growth projection for both FY26 and FY27? It is 6.1%. Oh, sorry, 6.4%. Right option is option 4. Next, which company secured a defense contract worth approximately 600 crore rupees in July through their subsidiaries for projects related to airborne, naval and radar systems? So which is the company we are talking about? Exides, that is Exides Technologies Limited, right? They are valued at approximately 600 crore through their subsidiaries. Which projects execution planned over the next 3 to 5 years? On how much percent of the total growth in India's foreign financial asset during FY25 was mainly driven by higher overseas direct investment, currency and deposits and reserve assets as per India's international investment position data released by RBI in June 2025. So on how much percent of the total growth in India's financial asset during was mainly driven by higher overseas investment? It was almost 72%, right? The data further revealed that the reserve assets alone accounted for over 54% increase in Indian residents' overseas financial assets, followed by currency and deposits and direct investment in properties. Next, on the occasion of the 70th anniversary of the State Bank of India on July 1st, in which two cities did SBI inaugurated their specialized global trade finance centers? It was in Kolkata and Hyderabad, right? And during the event, SBI has announced a solar rooftop program that will support India's renewable energy transition, and this initiative, it aligns with India's commitment of achieving net zero emissions by 2070. Apart from this, SBI, they have inaugurated a specialized global trade finance center in Kolkata, West Bengal and Hyderabad, Telangana. These centers, they aims to enhance the bank's trade finance capabilities by streamlining the domestic and international trade transactions. Next, identify the insurance company that partnered with AU Small Finance Bank in June 2025 to distribute their life insurance products through the bank's network. So identify that insurance company. It is Life Insurance Corporation of India. Also, this collaboration supports the national vision of insurance for all by 2047 that was given by IRDAI. Next, in July, IndusInd Bank Limited, they have launched the Indie for Business platform to support which of the following businesses segment in India? It was MSME, right? This newly launched digital platform will offer all banking services across payments, loans, collection and account insights. Next, mention the organization that subscribed to 1,301.25 crore worth of non-convertible debentures issued by Aditya Birla Capital Limited in July 2025 to support renewable energy and e-mobility financing in India. So which is that organization? It is Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, right? And they have issued non-convertible debentures worth 1,301.05 crore rupees, 2.05 crore, 1,301.25 crore rupees, right?
Next, mark the correct statement regarding the report released by RBI's financial stability in June 2025. If we look at the option, all these three options are rightly mentioned. Next, how much did International Finance Corporation commit to IndiGrid Trust in July for the development of India's largest 180 megawatt standalone battery energy storage system project in Gujarat? This is 460 crore rupees. This IndiGrid Trust, right? What is this? This IndiGrid Trust is basically a infrastructure investment trust in which you can invest money similar to the process that you can buy stocks and mutual fund, right? And another in one is InvIT and another are REITs, real estate investment trust. Correct. Next, what is the interest rate applicable for RBI's floating rate saving bonds 2020 for the period from July 1st to December 31st, 2025 with interest payable on 1st of January 2026? So what is the interest rate applicable here? The bonds are for 8.05%. Correct. Next, mention the bank that became the first UAE bank to receive in principle approval from International Financial Service Centers Authority to set up the new International Financial Service Center banking unit within GIFT City, Gandhinagar, Gujarat. So mention that bank. Which is that bank we are talking about? Mashreq Bank is the bank that we are talking about. Next, what amount was approved by Green Climate Fund for Asian Development Bank led program that aims to unlock large scale public and private investment in high impact and emerging clean energy sectors in India? It is $200 million. Next, identify the company that received a certificate of registration from SEBI to operate as a stockbroker and clearing member under SEBI stockbroker regulations of 1992. It is Mobivic Securities Broking Private Limited. Next, identify the organization that launched two non-par, non-linked individual plans, that is Navjeevan Shri and Navjeevan Shri Single Premium in July 2025 to cater financial requirements of buyers and various stages of life. So identify the organization. It is Life Insurance Corporation of India. Apart from these two new offerings, LIC has launched the Critical Illness Health Rider, a non-linked individual health rider that can also be integrated to the eligible base plans, right? And it will be catering to the gig economy. Next, which bank signed an agreement with CCIL International Financial Service Centers Limited to enable real-time settlement of USD transaction, that is dollar transactions at GIFT City in Gandhinagar, Gujarat, right? It is Standard Chartered Bank. So it was at the GIFT City that is in Gandhinagar, Gujarat. Next, mention the organization that launched in July the Universal Health Coverage Practitioners and Expert Knowledge Exchange and Resource, a regional peer-to-peer learning network, drive UHC across Asia and the Pacific region. So mention that organization. It is Asian Development Bank, ADB. Next, identify the company that in July unveiled a new index named BSE Insurance Index derived from the constituents of BSE 1000 index. So identify the company. It is Asia Index Private Limited. The index has a base value of 1000 and this newly launched index is derived from the constituents of BSE 1000 index that are classified under the insurance sector. Next, mention the bank that partnered with Indigo Airlines to relaunch the co-branded credit card powered by Indigo Blue Chip. So mention that bank. It is Kotak Mahindra Bank, right? They partnered with Indigo Airlines to relaunch the co-branded credit card powered by Indigo Blue Chips. Next, in July, Computer Age Management Services, that is CAMS, they have launched CAMS Pay Payment Gateway, a next generation platform designed to meet the evolving needs of the businesses in India. Question asked is, CAMS Pay is developed in partnership with whom? It is developed in partnership with MyLaPay. Next, Asian Infrastructure Investment Bank, they committed how much amount to IIFL Home Finance Limited to enhance affordable housing finance access to economically weaker section and low income groups in India. So AIIB, they committed how much amount? It is $100 million. Next, mention the mutual fund company that has launched the BSE Power ETF and BSE Power ETF Fund of Fund in July, exclusively focused on the power sector. So it is Grow Mutual Fund. They have launched this ETF and Fund of Funds. Next, what was the monetary penalty imposed by RBI on HDFC Bank in July for non-compliance with Foreign Exchange Management Act of 1999 regulation related to FDI investment? So what was the monetary penalty imposed on by RBI on HDFC Bank? It is 4.88 lakh rupees.
Next, mention the organization that launched the Venture Capital Fund Settlement Scheme in July to aid the settlement of violations of winding up provisions by migrated VCFs. So mention that organization. Which is it? It is your SEBI, Securities and Exchange Board of India. Next, identify the financial institution in India that entered into a joint venture with Japan-based Sumitomo Mitsui Financial Group in July to provide wealth management services in Japan. It is SBI Holding Incorporation. Next, students, is our homework section. First question, tell me who has been recently appointed as the brand ambassador for Eco Insurance. Second, who has been appointed as the head coach of Indian men's football team. Third question, tell me recently who became the first women Director General of Railway Protection Force in 143 history of Railway Protection Force. Fourth question, who has been appointed as the CEO of Manappuram Finance. Fifth question, recently who has been appointed as the Vice President of ICMAI and the President of ICMAI. So these are your 5 homework questions, students. I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 9 अक्टूबर के। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में 4 मेजर रेल प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे अभी IRSA 1.0 स्टैंडर्ड लॉन्च किया गया DRDO के द्वारा, ये क्या है इसको डिस्कस करेंगे। देन IIT मद्रास ने एक MOU साइन किया इंडियन नेवी के साथ ताकि रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन किया जा सके। देन इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 को डिस्कस करेंगे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी लॉन्च किया गया। तो ये सभी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी बेनिफिशियल सेशन रहेगा। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा 4 मेजर रेल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए 24,634 करोड़ की लागत से अक्रॉस 4 स्टेट्स। राइट, ये 4 स्टेट्स कौन सी है जहां से कनेक्टिविटी बेटर होगी? वो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड छत्तीसगढ़। देखो, इससे होगा क्या, एक तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। कनेक्टिविटी होने से क्या होगा? कंजेशन कम होगा एंड नियर बाय एरियाज में अंदर से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, लॉजिस्टिक्स नहीं जाएगा एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। जब 2 लोकेशंस एक तो ऐसे जाएं और एक डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट हो जाए, तो इससे क्या होगा? एक तो लॉजिस्टिक्स बेटर होगा, लॉजिस्टिक्स कम होगी, खर्चा कम होगा, तो फाइनल जो गुड है वो बेटर होगा। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सपोर्ट मिलेगा, राइट, उनके लिए जो कॉस्ट आएगी वो कम आएगी, राइट। तो और इससे क्या होगा? लोगों का आना जाना होगा, तो ट्रेड भी यहाँ से फ्लरिश होता हुआ देखेगा। तो इन चारों स्टेट्स में हम देखें तो कनेक्टिविटी बेटर होगी, कंजेशन कम होगा एंड इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉस्पर यहाँ पे होती हुई दिखेगी। एंड इससे 3,633 विलेजेस को बेनिफिट देखने को मिलेगा इन 4 रोड प्रोजेक्ट से। ठीक है, मार्क करेंगे। फिर महाराष्ट्र की हम बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे? देवेंद्र फडणवीस जी। गवर्नर आचार्य देवव्रत। मुंबई कैपिटल है एंड गुगामल नेशनल पार्क यहाँ पे लोकेटेड है। इसी के अलावा स्टूडेंट्स याद रखेंगे, अभी रिसेंटली एक एक्सरसाइज हुई, ब्राइट स्टार एक्सरसाइज। कहाँ पर हुई है ब्राइट स्टार एक्सरसाइज? इजिप्ट में हमें देखने को मिली थी एंड इंडिया ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया इन दिस ब्राइट स्टार एक्सरसाइज, राइट। फिर इसी के अलावा अभी इंडियन नेवी ने कमीशन किया हिमगिरी। ये क्या है? ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है, हिमगिरी एज वेल एज उदयगिरी, ये भी याद रखेंगे। उदयगिरी को भी एंड हिमगिरी, इन दोनों को कमीशन किया गया। कहाँ पर? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर DRDO ने अभी लॉन्च किया IRSA 1.0 स्टैंडर्ड को। IRSA क्या है? इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड 1.0। ये बेसिकली क्या है कि जो डिफेंस कम्युनिकेशन है ना, वो बेटर यहाँ पे होता हुआ देखेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि IRSA 1.0, एक तो आ जाएगा इसकी फुल फॉर्म बताओ, दूसरा आ जाएगा कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। एंड ये किस लिए लॉन्च किया गया था? मिलिट्री सर्विस कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, राइट। फिर इसी के अलावा स्टूडेंट्स याद रखेंगे, अभी मीराबाई चानू जी के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया
एट द कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के दौरान। देन रविंद्र चंद्रन अश्विन, राइट, इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले ली है आईपीएल से। देन इंडिया ने अभी 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बिड किया, राइट, एंड 2036 के ओलंपिक गेम्स के लिए भी बिड किया। इन दोनों कहाँ पे होस्ट करने की हम बात कर रहे हैं? अहमदाबाद, गुजरात में, राइट, इंपॉर्टेंट है, ये मार्क करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आईआईटी मद्रास, इन्होंने भी एक एमओयू साइन किया है इंडियन नेवी के साथ, ताकि रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन के ऊपर काम करा जा सके। देखो स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी क्या है, ये अब हम देख रहे हैं आज के युग में जब एआई आ गया है, मशीन लर्निंग आ गई है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। एंड जो टेक्नोलॉजी है वो हम देखते हैं कुछ ही टाइम में अपडेट हो जाती है, राइट। अगर टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है तो हमें अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उनको भी अप टू डेट रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम अप टू डेट नहीं रखेंगे तो दूसरी कंट्रीज अप टू डेट रखेंगी, उससे क्या होगा, हम पीछे रह जाएंगे। तो हमें पीछे नहीं रहना है, राइट, हमें अपनी टेक्नोलॉजी को अप टू डेट रखना है ताकि हम भी स्ट्रेंथन रह सके, हम अपनी डिफेंस सेक्टर को स्ट्रांग रख सकें। तो इसीलिए कि जो टेक्नोलॉजी है, राइट, वो स्ट्रेंथन रह सके, उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा सके, रिसर्च एंड इनोवेशन की जा सके, इसलिए आईआईटी मद्रास ने यहाँ पे ये एमओयू साइन किया है इंडियन नेवी के साथ। मार्क करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। चेन्नई तमिलनाडु में ये एमओयू साइन हुआ था। आईआईटी जो मद्रास है, जिनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फिर जिनका कैंपस कहाँ है, चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनवेल किया गया इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के लोगो एंड एथिक्स के ऊपर बात की गई। यहाँ पे हेरिटेज एंड मॉडर्न एआई विजन के ऊपर एआई आ गया है, हर सेक्टर में एआई का यूज हो रहा है, राइट, एंड एआई की मदद से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें इजी होती जा रही है। जो लोग 10 जने का काम करते थे, अब वो एक जना इजीली 10 जो लोगों का काम कर पा रहा है, राइट। तो एआई से बहुत चेंज आएगा स्टूडेंट्स, मैं फिर बता रहा हूँ, एआई को अपनाने लग जाओ, एआई टूल्स को यूज करने लग जाओ, एंड एआई से ही आप देखेंगे आने वाले टाइम में बहुत सारी जॉब लॉस भी जाती हुई दिखेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी जॉब डिमांड क्रिएट भी होती हुई दिखेंगी। जो लोग एआई को यूज करना जानते हैं, दे विल बी एट वेरी एडवांटेज, राइट। तो यहीं पे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि कैसे हम इंडिया को एआई में या फिर एआई से इंडिया में हम बेनिफिट ला सकते हैं, क्या उसका इंपैक्ट रह सकता है, उसके ऊपर ये एआई इंपैक्ट समिट देखने को मिली, करेक्ट। उसका एक लोगो लॉन्च किया गया, माय गवर्नमेंट के द्वारा ये प्लेटफॉर्म के द्वारा ये लोगो डिजाइन करने की बात की गई थी। एंड ये एआई इंपैक्ट समिट कब होगी? ये 19-20 फरवरी को होगी 2026 में। कहां पर? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में, राइट। इसका लोगो जो रहेगा, इसमें अशोका चक्र रहेगा सेंटर में, जो एक ट्रेडिशन को दर्शा रहा है, डाइवर्सिटी रहेगी, कलर ग्रेडियंट है, एंड क्लैरिटी के ऊपर काम किया जाएगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बात करेंगे। आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस रिपोर्ट 2025, ये इनइक्वालिटी के ऊपर बात करती है एंड जो बताता है कि आने वाले टाइम में या फिर अभी तक भी हम देख रहे हैं जो इनइक्वालिटी है ना, वो बढ़ती जा रही है। जो लोग रिच हैं, जिनके पास पैसा है, वो और रिच होते जा रहे हैं, एंड जो पुअर लोग हैं वो और पुअर होते जा रहे हैं। एंड इससे क्या होता है, जो ये गैप है वो बढ़ता जा रहा है। इवन यहाँ पे रिपोर्ट में बताया कि जो अगर हम बात करें पॉवर्टी रेट की, पॉवर्टी रेट में हमें गिरावट देखने को मिली है। जो पहले 4 in 10 इंडिविजुअल्स, अगर हम देखें 1995 का डाटा, 10 में से जो 4 लोग पहले पॉवर्टी में आते थे, अब वो सिर्फ 1 आ गए हैं। 10 में से 1 लोग पॉवर्टी के अंदर है, 2023 का डाटा बोलता है। इसी के अलावा अगर हम देखें चाइल्ड लेबर की, चाइल्ड लेबर भी काफ़ी गिरता हुआ दिखा है, जो कि अगर हम देखें 5 से लेके 14 साल के जो बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर के अंडर कंसिडर किए जाते हैं, तो 1995 में अगर हम कंसिडर करें 250 मिलियन बच्चे यहाँ पे चाइल्ड लेबर थे, वो अब घट के 106 मिलियन के अंडर आ गया 2024 के अंदर। तो काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। स्कूल गोइंग बच्चों का भी डाटा देखें तो प्राइमरी एरियाज में 10% ज़्यादा यहाँ पे एनरोलमेंट देखने को मिली एंड स्कूल कंप्लीशन रेट देखने को मिला। वहीं पे सेकेंडरी स्कूल्स की बात करें तो 22% ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला है। पॉवर्टी की अगर हम बात करें, जैसे हमने देखा, तो अभी भी 800 मिलियन लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन जीते हैं। $3 पर डे, जो अभी यूएन के द्वारा नई गाइडलाइंस आई थी, राइट, तो $3 पर डे से अंडर कमाने वाले लोगों को पॉवर्टी में बोला जाता है, बीपीएल, ब्लू पॉवर्टी लाइन बोला जाता है। एंड 800 मिलियन लोग अभी भी स्टिल ऐसे हैं, राइट। एज पर द रिपोर्ट ऑल्सो 1 in 4, 1/4 में से हर एक व्यक्ति अभी भी ऐसा है जिसको प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं मिल पा रहा है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। फिर यहीं पे आप देख सकते हैं टॉप 1% 20% ऑफ द इनकम को होल्ड करते हैं एंड 30% ऑफ द वेल्थ को होल्ड करते हैं। ये डाटा बता रहा है, राइट। ये डाटा किसके द्वारा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस रिपोर्ट अभी रिलीज की गई। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, फिर आ जाते हैं, आरबीआई ने लिंक किया भारत कनेक्ट एंड एफएक्स रिटेल को टू फैसिलिटेट द डॉलर
ट्रांजैक्शन। इंपॉर्टेंट है, राइट। ये जो भारत कनेक्ट है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे, ये क्या है? भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भारत कनेक्ट एंड एफएक्स रिटेल, फॉरेक्स रिटेल प्लेटफॉर्म, ये आपका क्लियर कॉप का है, क्लियर कॉप डीलिंग सिस्टम्स लिमिटेड का, इनका ये प्लेटफॉर्म है। इन दोनों को यहाँ पे अभी कनेक्ट किया गया है एंड पायलट बेसिस पे ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। पायलट बेसिस मतलब ट्रायल बेसिस पे इसको लॉन्च किया गया, जहां पर एक्सिस बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक एंड येस बैंक को ये पायलट प्रोजेक्ट अभी प्रोवाइड करा गया फॉर दिस। इससे होगा क्या? जो कस्टमर्स रहेंगे इन बैंक के वो एक्सेस कर पाएंगे एफएक्स रिटेल को थ्रू क्रेड मोबिविक एप्लीकेशंस फॉर परचेजिंग ऑफ द यूएस डॉलर अगेंस्ट द इंडियन रुपी ऑन वैल्यू कैश बेसिस, राइट। एंड ये जो प्लेटफॉर्म है ये सपोर्ट करेगा फॉरेन एक्सचेंज आउटवर्ड रेमिटेंस को, ये प्रोवाइड करेगा फॉरेन एक्सचेंज कार्ड को लोड करने में, रिचार्ज करने में एंड यहाँ पे फिजिकल डिलीवरी लेने में ऑफ द फॉरेन करेंसी नोट्स। तो करेंसी नोट्स को यहाँ पे इजीली एक्सेस करने का ये काम कर पाएगा एंड इजीली हम डॉलर्स को बाय कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, एनपीसीआई ने लॉन्च किया नया सब्सिडरी एनटीएसएल को टू बूस्ट पेमेंट इनोवेशन इन द फिनटेक सेक्टर, राइट। इंडिया में फिनटेक सेक्टर को बूस्ट करने के लिए ये एनपीसीआई टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड लॉन्च किया है, जिससे हम फिनटेक सेक्टर में, जो कि है फाइनेंस टेक सेक्टर, वहां पर हम इनोवेशन को प्रमोट करेंगे, नए प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, राइट, इनोवेशन देखने को मिलेगी। इससे क्या होगा, जो अभी हम जैसे मैंने अभी बताया था, हम डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने की बात करते हैं, तो सिमिलरली फिनटेक सेक्टर में हम कैसे न्यू प्रोडक्ट्स ला सकते हैं, नए इनोवेटिव प्रोडक्ट ला सकते हैं, राइट। तो एक और चीज, एनपीसीआई ये फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम ग्लोबल एक्सेप्टेंस को बढ़ा सकें ऑफ यूपीआई। हमने देखा मल्टीपल कंट्रीज में यूज किया जा रहा है यूपीआई को, अब फर्दर इसको और बड़े स्केल पर हम पूरी दुनिया में ले जाने की काम करेंगे, करेक्ट। इससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ेगी, रिसर्च एंड इनोवेशन बढ़ेगा इन द फिनटेक सेक्टर। एनपीसीआई की बात करें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एमडी एंड सीईओ यहाँ पे कौन रहेंगे? दिलीप एसबे। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्ट है, ये तो बजाज फिनसर्व ने रीब्रांड कर दिया खुद के इंश्योरेंस बिजनेस को एज बजाज जनरल इंश्योरेंस एंड बजाज लाइफ इंश्योरेंस। पहले क्या नाम था? बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस एंड बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस, जिसको अब अलायंस हटा दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, इन्होंने लॉन्च किया हेल्थ अल्फा विद 50 अदर ऑप्शंस। ये कस्टमाइज प्लान रहेगा, राइट, एंड 5 लाख का, 5 लाख टू अनलिमिटेड का यहाँ पे आपका अमाउंट रहेगा, टेन्योर रहेगा अप टू 5 इयर्स। ये कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए एंड क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि सब्सिडरी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, एंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कस्टमाइजेबल प्लान रहेगा। अडल्ट के लिए फ्रॉम 18 ईयर्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम 91 डेज टू 25 ईयर्स के लिए प्लान देखने को मिलेगा, जिसका नाम है हेल्थ अल्फा। नेक्स्ट आ जाता है, फिर आरबीआई ने कैंसिल किया लाइसेंस ऑफ सतारा बेस्ड जिजामाता महिला शाकारी बैंक। ये एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है एंड ड्यू टू देयर पुअर फाइनेंशियल पोजीशन एंड फेलियर टू कंप्लाई विद रेगुलेटरी नॉर्म्स अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1945, इनका लाइसेंस अभी कैंसिल होता हुआ दिखा। फिर इसके बाद आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस पे। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया की जो जीडीपी है, इट रेज टू 6.5% फॉर FY26 एंड 6.3% फॉर FY27, इसमें लोअर होती हुई हमें दिखी। देखो इंडिया वर्ल्ड के अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है, राइट, एंड इवन अभी यूएसए के द्वारा इतने टैरिफ्स लगाए गए, हेडविंड्स हमें देखने को मिली, स्टिल इंडिया काफी स्ट्रांग है एंड कई सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा इंडिया की जो जीडीपी है वो फर्दर ग्रोथ बेसिस पे ही यहाँ पे देखने को मिली है, बढ़ के ही यहाँ पे सामने आई है। यूएसए ने भी हमने देखा था फार्माक्यूटिकल सेक्टर पे 100% टैरिफ यहाँ पे इम्पोज किया। जो H1B वीजा की फीस है वो बढ़ा के $1 लाख कर दी गई, तो इससे काफी इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था, लेकिन हमें नलिफाई होता हुआ हमें वो दिखा है, क्योंकि फार्माक्यूटिकल सेक्टर का अगर हम देखें तो चाइना के द्वारा जो 30% टैक्स लगाया गया था, टैरिफ लगाया था, उसको जीरो कर दिया गया एंड H1B वीजा के रिस्पॉन्स में इन्होंने के वीजा लॉन्च किया कि इंडिया के जो स्टेम प्रोफेशनल्स हैं उनको ये अट्रैक्ट करेंगे, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, फिर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। हम बात कर रहे हैं नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। आप ये 3 इंडिविजुअल्स को देख सकते हैं, इन रिसर्चर्स को, जो है सुसुमिता कितागावा, रिचर्ड रॉबसन एंड ओमार एम याकची, राइट। इन तीनों को यहाँ पे ऑनर किया गया है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2025 से फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के लिए। डायरेक्टली इसको याद रखेंगे। फिर आ जाते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल एक्टर मोहन लाल, इनको सम्मानित किया गया विद COS कमेंडेशन कार्ड से। जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इन्होंने ऑनर किया है मलयालम फिल्म सुपरस्टार एंड ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल मोहनलाल विश्वनाथन को विद द COAS कमेंडेशन कार्ड। क्यों? फॉर देयर आउटस्टैंडिंग सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट टू द आर्म्ड फोर्सेस, इसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा।
फिर आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पे स्टूडेंट्स। राम मोहन जी के द्वारा लॉन्च की गई बुक अबव एंड बियॉन्ड, ये शिव कुमार मोहंका जी के द्वारा ऑथर की गई एंड ये बुक बेसिकली बताती है जो इंडियन सिविल एविएशन सेक्टर की जो अचीवमेंट्स है उसको इस बुक में दर्शाया गया है। 445 पेजेस की ये बुक देखने को मिलेगी, राइट। इसी के अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंपॉर्टेंट डेज पे। नेशनल पोस्टल वीक ऑब्जर्व किया जाता है स्टूडेंट 6 से 10 अक्टूबर तक एंड ये वीक ऑब्जर्व किया जाता है बेसिकली सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री को हाईलाइट करने के लिए 6 से 10 अक्टूबर तक। फिर यहीं से याद रखेंगे 6 अक्टूबर को टेक्नोलॉजी डे, 7 को फाइनेंशियल इंक्लूजन डे, 8 को फिलेटली एंड सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डे, 9 को वर्ल्ड पोस्ट डे एंड 10 को कस्टमर डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं वर्ल्ड कॉटन डे। 7 अक्टूबर को स्टूडेंट्स हम वर्ल्ड कॉटन डे ऑब्जर्व करते हैं। ये डे ऑब्जर्व करते हैं कि जो कॉटन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ में, ग्लोबल ट्रेड में, पॉवर्टी रिडक्शन में। पहली बार 7 अक्टूबर 2021 में इस डे को ऑब्जर्व किया गया था एंड रेगूर सॉइल या फिर हम बोले ब्लैक सॉइल पे ये ग्रो की जाती है, कॉटन अच्छे से ग्रो होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टेट न्यूज़ के ऊपर। अभी मध्य प्रदेश ने एक एमओयू साइन किया है स्पेन के फीरा बार्सिलोना इंटरनेशनल के साथ फॉर कन्वेंशन सेंटर। ये फीरा बार्सिलोना इंटरनेशनल ये स्पेन की कंपनी काफ़ी ज़्यादा दिग्गज है, या काफ़ी अच्छा काम करती है कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन मैनेजमेंट को बनाने के लिए, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास का एक कन्वेंशन सेंटर बनाने की बात की गई यहाँ पे भोपाल मध्य प्रदेश में, किसके साथ एमओयू साइन किया गया? फीरा बार्सिलोना इंटरनेशनल के साथ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये एमओयू साइन किया। फिर आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स। अभी जी किशन रेड्डी जी एंड पेमा खांडू जो चीफ मिनिस्टर हैं अरुणाचल प्रदेश के, इनके द्वारा अरुणाचल प्रदेश का पहला कमर्शियल कोल माइनिंग ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जो कि है नामचिक नामफुक कोल माइन प्रोजेक्ट, राइट। क्वेश्चन आ जाएगा नामचिक नामफुक कोल माइन कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, चंगलांग डिस्ट्रिक्ट में है। किसके द्वारा लॉन्च की गई? जी किशन रेड्डी जी एंड पेमा खांडू जी के द्वारा लॉन्च की गई एंड ये पहली कमर्शियल कोल माइनिंग प्रोजेक्ट रहेगा कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होती हुई दिखेगी। मेंशन द स्टेट, जो कि थर्ड इंडियन स्टेट बन गई जिन्होंने रिकॉर्ड किया 1 करोड़ रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को। पहले महाराष्ट्र में सर ये डाटा अचीव हुआ था 3 CR का 1 करोड़ इन्वेस्टर्स का। फिर उसके बाद कौन सी स्टेट बनी? यूपी बनी और अब गुजरात बन गई है, ठीक है, जहां पे 1 करोड़ रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई करो उस ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने एक एमओयू साइन किया IMD इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ, ताकि लॉन्च करें इंडिया का पहला वेदर डेरिवेटिव्स। तो कौन सी है वो बताओ, क्या नाम रहेगा उसका? वो है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड। नेक्स्ट आइडेंटिफाई करो एयरलाइंस को जिन्होंने साइन किया $12.25 बिलियन अग्रीमेंट विद एयरबस टू परचेज 50 एयरक्राफ्ट, जो कि है A321 XLR एयरक्राफ्ट, जिसका परचेज राइट्स रहेंगे जिनके पास, कि हम 20 एडिशनल, यहाँ पे 50 तो लिए ही हैं, अब 20 एडिशनल भी यहाँ पे बाय कर सकते हैं, करेक्ट। तो आइडेंटिफाई करो उस एयरलाइन को, कौन सी एयरलाइन है जिन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया एयरबस के साथ? वो है एयर एशिया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अनवेल किया नया कॉर्पोरेट लोगो जो कमेमोरेट करता है 70th एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडेशन डे ऑफ द ग्रुप? तो ये कौन सी है? ये है यामा मोटर्स कंपनी लिमिटेड एंड ऐसा पिछले 27 सालों में पहली बार हुआ है कि इन्होंने अपना लोगो यहाँ पे चेंज किया। मूविंग ऑन, मेंशन द कंपनी जिन्होंने साइन किया एक एमओयू विद केयर एक्सपर्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, राइट, जो कि एक रिलायंस जियो बैक्ड हेल्थ केयर कंपनी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिन्होंने लॉन्च किया नेशनल डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म। तो ये है टेलीकॉम इजिप्ट, मार्क करेंगे इसको। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई करो उस कंपनी को जिन्होंने FTSE फॉर गुड इंडेक्स सीरीज को अभी रिसेंटली डिजाइन किया टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज जो डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं स्ट्रॉन्ग ESG प्रैक्टिसेस, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। तो वो है JSW एनर्जी लिमिटेड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द सेकंड कोहोर्ट ऑफ द ऑर्बिट प्रोग्राम अंडर अटल इंक्यूबेशन सेंटर टेक्नोलॉजी हब स्पेस टेक एक्सेलरेटर, जो सपोर्ट करता है 17 स्पेस टेक स्टार्टअप्स को? तो वो है T हब टेक्नोलॉजी हब। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो कंपनी को जो कि बन गई वर्ल्ड की पहली पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी टू अचीव अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $4 ट्रिलियन। वो है एनवीडिया। ये पहली कंपनी बनी है जिन्होंने ये $4 ट्रिलियन मार्केट कैप अचीव करी एंड इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट भी अब बन गई है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का जो डाटा था तब $3.75 ट्रिलियन का था, राइट। एंड दिस इज अ हाई चांस अब माइक्रोसॉफ्ट भी ये फीट अचीव कर लेगी। एप्पल कितनी मार्केट कैप पे स्टैंड करती है? $3.17 ट्रिलियन पे एप्पल स्टैंड करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई करो शिपिंग कंपनीज को जिन्होंने अनाउंस किया 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री इन जुलाई, मार्किंग द लार्जेस्ट FDI इन दिस सेक्टर। तो वो है इंट्रॉयंट नेविगेशन कंपनी लिमिटेड एंड डेनिश एंड पार्टनर्स लिमिटेड।
राइट। एंड यहाँ पे इनके द्वारा 100% या फिर इंडिया के द्वारा 100% एफडीआई अलाउ किया जा चुका है शिपिंग सेक्टर में 2005 में, राइट। एंड इनके द्वारा यहाँ पे लार्जेस्ट एफडीआई हमें देखने को मिला इस सेक्टर में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो स्टॉक एक्सचेंज को जो कि 4th रैंक करा ग्लोबली इन द आईपीओ फंड रेजिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर 25 एज पर द S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस डाटा। तो वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। फिर आ जाते हैं, व्हाट वाज इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन जो कि मेजर किया गया बाय सीपीआई अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल अर्बन एंड कंबाइंड फॉर बोथ द मंथ ऑफ जून, जो कि रिलीज किया गया एनएसओ के द्वारा जुलाई के महीने में। तो व्हाट वाज इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन, ये था 2.1%। नेक्स्ट, इंडियाज ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट इंक्लूडिंग द मर्चेंडीज एंड सर्विसेज, ये नैरो कर गया शार्पली डाउन टू $3.51 बिलियन एज पर द ट्रेड स्टेटिस्टिक्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26 फॉर द मंथ ऑफ जून, जो कि रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा जुलाई के महीने में। नेक्स्ट आ जाते हैं, नाबार्ड के द्वारा कमेमोरेट किया गया 44th फाउंडेशन डे विद वेरियस की इनिशिएटिव्स चेन्नई तमिलनाडु में। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें बताना है, ए सही है, बी सही है, सी गलत है। सी कह रहा है कि नाबार्ड ने एक टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया जो टारगेट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को अमंग द रूरल एंड सेमी अर्बन पॉपुलेशन। तो नहीं, टेलीग्राम नहीं, व्हाट्सएप चैनल यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो कंपनी को जो एक एंटर कर गया इनटू अ बाइंडिंग अग्रीमेंट विद अलायंस ग्रुप, जो कि एक 50-50 डोमेस्टिक री इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर कंपनी है, बन गई 50-50% जॉइंट वेंचर रहेगा इनका, जो सर्व करेगा डायनामिक एंड हाई ग्रोथ इंश्योरेंस सेक्टर को इंडिया में। एंड इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 टारगेट जो इंडिया का है उसको अचीव करने में ये हेल्प करेंगे। तो ये कौन सी है, ये है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। Next, what was India's GDP growth forecast for FY25 according to the report title Asian Development Outlook? जुलाई के लिए slower growth amid tariffs and uncertainty। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा रिलीज किया गया। तो यह है 6.5%। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने एस्टिमेट किया इंडिया का जीडीपी फॉरकास्ट टू बी 6.3% फॉर FY26। तो किसके द्वारा यहाँ पे ये प्रोवाइड किया गया, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के द्वारा। नेक्स्ट, मेंशन द कंपनी जिन्होंने BEML लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया टू वर्क टुगेदर ऑन को डेवलपमेंट ऑफ एडवांस मरीन सिस्टम्स कवरिंग इनोवेशन, इंडिजीनियस डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग अंडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। तो यह है हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड। नेक्स्ट, एज पर द IMF जुलाई 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट, व्हाट इज इंडियाज रिवाइज GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर बोथ FY26 एंड FY27। तो 6.4% यहाँ पे प्रोजेक्ट की जा रही है। एंड इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। Next, students, is our homework section. First question, tell me who has been recently appointed as the brand ambassador for Eco Insurance. Second, who has been appointed as the head coach of Indian men's football team. Third question, tell me recently who became the first women Director General of Railway Protection Force in 143 history of Railway Protection Force. Fourth question, who has been appointed as the CEO of Manappuram Finance. Fifth question, recently who has been appointed as the Vice President of ICMAI and the President of ICMAI. So these are your 5 homework questions, students. I need to see maximum participation from all the students watching this video.